Hello, my dear students. How are you guys? So I welcome you in the session of electrostatics, and this is our lecture 7. Okay. So in the previous lecture, what we have did, we have seen the electric field due to an electric dipole. Okay. And we have also seen what a dipole is, what the dipole moment is, what is its direction. Okay. And two cases we have discussed about the इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है ना, कि what will be the electric field possessed by the dipole itself when a point is placed on the axis and when a point is placed on the perpendicular bisector. So the two cases we have seen. ठीक है. And in conclusion of that, if I show you here, just a second. So a dipole is nothing but two charges of equal magnitude but opposite sign are separated by some distance, and which is generally we will take 2 times of L. Okay. Suppose a point is present on the axis, then what will be the possibility of this electric field? ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जस्ट गिव मी अ सेकंड. जस्ट अ सेकंड. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस. सो डाइपोल क्या था हमारे पास? डाइपोल इज अ ग्रुप ऑफ टू चार्ज. One of them is positive. Just a second, let me draw it again. One of them is positive and one of them is negative. ठीक है. सो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है. वी ऑल रिमेंबर दैट. ठीक है. डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज. ठीक है. तो डाइपोल मोमेंट को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज गिवन बाय चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2L. So direction of P vector will be like this. This is a vector quantity. So if a point is present on the axis of the dipole, what is the electric field then? So for short dipole के लिए you have to remember that electric field on axial position is given by 1 upon 4 pi epsilon naught P 2P upon R cube, where R is the distance of this particular point from the center of the dipole. And in equatorial position or in perpendicular position, this will be the case. This is plus q, this is minus q. Here we have taken a point at the perpendicular bisector. So this distance would be L, this distance would be L, because total distance is 2L. This is point P and this distance is R, perpendicular distance. Now what is the electric field in this case? So it will be 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R cube. This is for short dipole. Short dipole. Now, if you talk about the direction, so in axial position, dipole moment की जो direction होगी, electric field की direction भी वही ही होगी, same direction में होंगी. So electric field and dipole moment are in same direction. In what case? In case of axial. ठीक है ना? But in case of perpendicular bisector और broad on position भी same बोलते हैं. In this case, E vector and P vector are opposite. ठीक है ना? तो ये हमने पढ़ा था. ठीक है.
क्लियर है सभी को? एवरीवन, इज दिस क्लियर टू यू ऑल? जेएनवी अहमदनगर, रायचूर, प्रत्युष्पा, शिमोगा, यनम, सतारा, सबके सब रेस्पॉन्स दो भाई, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट। मतलब ना तो ये पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, ना ये पॉइंट एक्सिस पर है, ये कहीं भी है, एक जनरल पोजीशन। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट? तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, वी नो दैट कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फॉर व्हाट? डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट अभी हमने क्या देखा था, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जनरली वी विल कंसिडर दिस एज नेगेटिव एंड दिस एज पॉजिटिव, ठीक है। गॉट इट? सो डाइपोल मोमेंट मेरा किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, सॉरी सॉरी, दिस वे में, है ना। यहाँ पे कोई पॉइंट रखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसलिए रिजल्टेंट इसी तरफ ज्यादा आता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अभी तो बात की पीछे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज पी वेक्टर। नाउ अब मुझे एक बात बताओ, इफ आई रिजोल्व दिस पी वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, व्हाट विल बी द कंपोनेंट? इस डायरेक्शन में पी का कंपोनेंट क्या होगा, बताओ, एनी वन ऑफ यू, कैन एनीवन टेल? इस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन, व्हाट इज द, ओ यू आर सेइंग पी साइन थीटा? नो, बिकॉज देखो, इफ दिस इज अ वेक्टर एंड दिस इज एंगल थीटा, तो जिस एक्सिस से एंगल बन रहा है ना, उस एक्सिस पर जो कंपोनेंट होगा वो कोस थीटा होगा, दैट पर्टिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। आप बताओ, आप क्या होगा इसका कंपोनेंट? एवरीवन, इट इज पी कोस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर क्या बनेगा, दिस इज द परपेंडिकुलर, है ना, दिस इसके परपेंडिकुलर होगा ये, तो दिस विल बी पी साइन थीटा। अब अगर इस जनरल पॉइंट पर इफ आई टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पी कोस थीटा की वजह से, देखो ये पी कोस थीटा क्या है, अब इस एक्सिस पे भी दो पॉइंट ले सकते हैं हम, दो एक्सिस बना सकते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, बना सकते हैं कि नहीं, है ना। अब ये बताओ, अकॉर्डिंग टू दिस पी कोस थीटा, दिस पॉइंट पी लाइज ऑन द एक्सिस, ठीक है। सपोज हमारे पास एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट इटसेल्फ पी कोस थीटा है, और कोई पॉइंट उसकी एक्सिस पे आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अभी बताएं। अगर पॉइंट इज लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ अ डायपोल, then electric field will be, let's say this is E1 vector, this is E2 vector। तो E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अभी बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 टाइम्स ऑफ पी, लेकिन यहाँ पे पी क्या है, पी कॉस ऑफ थीटा, 2 टाइम्स ऑफ पी कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यू, वेयर आर इज द डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का, ये क्या है, स्मॉल आर। ओके, दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली E2 के लिए निकाल सकते हो, देखो E2 क्या है, E2 is a point for this dipole. If you see this P sin theta, for this particular dipole, this point is at perpendicular bisector. देखो, this point is at perpendicular bisector. And perpendicular bisector के लिए what is the value of E2? E2 will be 1/4 pi epsilon naught only P, P upon R cube था, लेकिन यहाँ पे P की वैल्यू क्या है, P sin theta. So it will be P sin theta over R cube. This is equation number 2. Now, if I ask you what is the resultant, what is the resultant? What is the resultant? So, resultant would be E net here would be given by both E1 and E2 are perpendicular, E1 square plus E2 square. And when you solve it,
By putting these value, you will get 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R cube into square root of 1 plus 3 cos square theta. This is the E net magnitude. Okay. नाउ यहाँ कोई रिजल्टेंट हो गया, इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, ई वेक्टर ई नेट. व्हाट इज दिस एंगल? दिस एंगल इज नॉट थीटा, दिस एंगल इज अल्फा. This angle is alpha. We can say for direction wise, tan alpha is equals to E1 by E2, sorry, E2 by E1. Okay. And when you do so, E2 by E1 you will do. So you will get tan alpha is equals to tan theta by, this is for the direction and this is for the magnitude. And this is only valid for short dipole. Short dipole. ठीक है. किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनीवन? यार आप लोग रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हो एंड इट्स नॉट गुड. मैं इतना चीख चीख के पढ़ा रहा हूं आपको और आप लोग कोई रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो. इट्स अ बैड हैबिट यार. यू आर माई चैंप्स एंड इफ चैंपियंस इज नॉट रिप्लाइंग देन व्हाट कैन बी अंडरस्टूड? बताइए. सो इज दिस क्लियर टू यू ऑल? जेएनवी यनम, जेएनवी सतारा, महसाना, जेएनवी शिमोगा, जेएनवी अहमदनगर, जेएनवी रायचूर, प्रत्युष्पा. Is this clear to you all? Any kind of doubt you having in this expression? Any one of you? Okay. So it's clear to JNV Anam. What about you, JNV Satara? JNV Raichur has also. Okay, 10 alpha doubt. देखो तेरा तुम्हारा डाउट अभी क्लियर करता हूं मैं. मेरे पास ये पॉइंट P था. इस पॉइंट P पे दो कंपोनेंट हैं, E1 और E2. इनका एक रिजल्टेंट आया है E. ये एंगल हमने अल्फा लिया, ये थीटा नहीं होगा. ओके. टेन अल्फा कैसे निकलेगा? अब टेन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस. परपेंडिकुलर क्या है? E2 है. बेस क्या है? E1 है. तो E2 बाई E1. अब E2 की वैल्यू क्या आई थी? E2 की वैल्यू थी P साइन थीटा अपॉन आर क्यू. के पी साइन थीटा और आर क्यू. E1 की वैल्यू क्या थी? 2 KP साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा बाई आर क्यूब. आर क्यूब से आर क्यूब मरा, के से के मर गया, पी से पी भी मर गया. अब क्या बचा? साइन थीटा बाई 2 cos थीटा. यही तो बचा. साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या है? टेन थीटा बाई 2. इसीलिए तो हम लिख रहे हैं टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2. गॉट इट? अब क्लियर है जेएनवी रायचूर? ओके. नाउ डायपोल को अब हम क्या करेंगे? अभी तक तो हम डायपोल की फील्ड निकाल रहे थे, है ना? व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ द फील्ड्स ड्यू टू द डायपोल. अब नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द डायपोल एंड पुट इट इन अ एक्सटर्नल फील्ड. ये एक्सटर्नल फील्ड कहां से आ रही होगी? कोई भी सोर्स चार्ज होगा जो ये फील्ड क्रिएट कर रहा होगा. एंड दिस फील्ड इज अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, which means ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है. इट इज नॉट वेरिंग. ठीक है. कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस कैसी होती हैं? लाइक दिस, पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड. दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके.
Now we have put the dipole in the uniform external electric field. देखो ये यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है. ओके, E vector. This is the dipole and we have placed the dipole in slightly tilt position. ठीक है, so that we can observe it easily. Now the angle that it has been placed is theta from electric field. So electric field say what is the angle? Theta angle पे we have placed the dipole. ठीक. If you talk about the force, this is positive, this is positive charge. पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड फोर्स कैसे लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. so this arrow is showing in the direction of field. नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कैसा लगता है? ऑलरेडी टोल्ड यू, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. नाउ अब देखो, ये फोर्सेस, ये अपना डाइपोल है. ठीक है, ऐसे है, ये अपना डाइपोल है और मैं इसे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं इस पे ऐसे. तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये घूम रहा है. बताओ. It is translating or rotating. These kind of forces, this F and F will, what will it cause to this dipole? This dipole will rotate. Clear है ना? देखो, यहां से पकड़ के खींच दिया और यहां से. अब ये क्या करेगा? टिल्ट करेगा, है ना? घूमर. It will rotate. Okay, ठीक है. But what if about the net force? Total force on dipole. If you talk about the net force, so F net will be, this is QE and this is minus QE. So net force क्या आ गया मेरे पास? 0. Which means in uniform electric field, the net force on the dipole will be 0. Got it? But what about the torque? These are the forces which is separated by some distance. And we know that when two forces equal and opposite in magnitude are separated by some distance, they will form a couple. They will form a couple. And couple is nothing but the torque. You can also say it the moment of the couple. Okay, or torque. So here moment is given by F into the distance between them. Distance between them, let's say it is L. And this distance should be perpendicular to both the forces. Okay. So this moment of this couple will be given by F into L, which is nothing but the torque. So same thing we have to do with this dipole itself. अब देखो, डाइपोल पे भी दो फोर्सेस लग रहे हैं. टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द डाइपोल. ठीक है, और डाइपोल हमारे पास कुछ ऐसे है, टिल्ट पोजीशन में. दीज आर द फोर्सेस. अब मुझे एक बात बताओ आप सब, क्या ये डिस्टेंस, ये लेंथ कितनी है? डाइपोल की लेंथ विच इज 2a इसमें गिवन है. ओके, चलो 2a लेके चलेंगे. 2a, क्या ये 2a इस f और इस f के परपेंडिकुलर है? बताओ एवरीवन. Is this 2a is perpendicular to both forces? बताओ बताओ. जेएनवी यनम, सतारा, जेएनवी ईस्ट गोदावरी, बताओ. एवरी वन ऑफ यू टेल मी. जेएनवी मेहसाना, प्रत्युष्पा, शिमोगा. What happened, guys? I'm not audible to you. Am I audible?
Any yes and no? Okay. So tell me, JNV Anam, you are the only one who is responding. So I'll have to ask it to you. Tell me, this 2A is perpendicular to both the forces or not? Is this and this is the same case? No, because if you see, this L is perpendicular to both the forces, but in this case, this 2A is not perpendicular. So that is why we have to make it a perpendicular distance. For that case, what we will do? We will take the component of this 2A in perpendicular direction. Because this angle is theta, so this angle is also theta. Got it? If this angle is theta, this is also theta. This is also theta. Horizontal से कहीं से भी measure करो, this will be theta. Now, what is the perpendicular component of this 2A? It will be 2A sine theta. Got it? Now, you can say that torque here is equals to torque को how can we write? F into R perpendicular. This actual formula is this. Torque vector is equals to R vector cross F vector. But when we open it, it will be R vector का magnitude, F vector का magnitude, sine of theta, n cap. And n cap is the perpendicular unit vector. So what we can say? We can say that for magnitude purpose, if you take the magnitude once again, torque vector will be RF sin theta. N cap का magnitude क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. So if you combine this R sin theta with F into R of sin theta, R sin theta is nothing but the perpendicular component of the distance. And in this case, it is 2A sine of theta. Okay? So we can multiply here that torque vector magnitude is equals to F into 2A sine theta. Okay? Now move on to the next page. या यहीं पे कर सकते हैं क्या? नहीं, चलिए मैं दूसरी स्क्रीन ले लेता हूं. I'll do it for you. So torque vector is coming out to be as F into 2A sin theta. ठीक है? F is nothing but Q into E. 2A sin theta. अब बताओ, E को ऐसे ही रखो. Q into 2A, what it is? Q into 2A. Can anyone tell what is the value of Q into 2A? Anyone? Q into 2A is the dipole moment. Very good, JNVNM student. Keep it up. So it will become P into E sine of theta. And again, we can write it as in the vector form. That it is P vector cross E vector. Okay. So torque here is torque vector is equals to P vector cross E vector. Okay. So note it down. Note it. Note down. Okay. कर लिया नोट सभी ने? एवरीवन? JNV Yanam, Satara, Ahmednagar, Mehsana. Have you noted down? JNV Shimoga student, Pratyushpa. Okay. So we can write that torque vector is equals to, or also you can see it from here. It is P vector cross E vector. This is the cross multiplication, vector multiplication. Okay. Now, if you talk about the potential energy,
if you talk about the potential energy of the electric dipole, same thing we have did. We have put it in the field. Okay. Now, we know that potential energy of electric dipole. Potential energy is equals to minus of, always remember, minus of work done by conservative force. Conservative force. Okay. What is the conservative force here? This electrostatic force. F is equals to QE. In the very first lecture of the starting of electrostatic, I have told you the the Coulomb's law. And in Coulomb's law, we have studied that the force, electrostatic force, is a conservative force. Okay. So what we have to do, we have to just rotate it a little bit. Theta angle pe we have to rotate it. Okay. Then we will notice down what is the work done by this conservative force and find the expression of potential energy. Okay. Now, potential energy is equals to minus of work done by conservative force. Okay. But here, अभी तो हमने पढ़ा था कि net work done is zero. Sorry, net force is zero. So who is doing the work? Work is doing by this torque in rotating it. Okay. So we can say that it is nothing but tau dot d theta. Okay. Got it? Now, if you will see that this force try to rotate it in this direction, this upward force is try to rotate it in this direction. So the rotation of this dipole will be in clockwise direction. If you curl your finger in the clockwise direction, the direction of thumb represents the direction of torque. So torque here in this case is inside, and inside direction of this will be what? K cap. क्योंकि अगर we will consider it as x axis, vertical as y axis, so inside direction will be minus z, because outside it will be plus z, and z direction ka unit vector is k cap. Okay. So torque is going inside. If you see d theta is also rotating in the same sense. है ना? D theta means the displacement, angular displacement. It is also rotating in this way, in this way. So this is also going in this direction. Okay. So what we can do here, the angle between torque and d theta will be 0. And 0, if you open it, it will become tau d theta into cos of theta. Okay. It will become minus tau. Cos theta is 0 here. So tau into d theta. Now put the value of tau here. Tau we have already calculated. It is minus of P sine of theta, d theta. So P and E is constant. When you integrate it, this is dW. So energy will be also very less. So for complete potential energy, you have to integrate. Okay. Put the integration sign at the last. You can do it. Okay. At the last, we are putting. No problem in that case. Minus P sin theta d theta. अब P और E क्या है? Constant है. So you can take them out. P sin theta d theta. Okay. Let's say it is rotating from theta 1 to theta 2.
any general value. Okay. Can anyone tell me? Can anyone tell me what is the integration of sine theta? What is the integration of sine theta? Cos theta. Cos theta. Cos theta or minus cos theta? Be very clear with that. देखो, differentiation of sine theta gives you cos theta, which means integration of cos theta gives you sine theta. Differentiation is just the inverse of integration, but differentiation of cos theta gives you minus of sine theta. समझे? So when you integrate it ना, it will gives you minus cos theta. ठीक है? When only sine theta is there, it will gives you, yeah, obviously it is giving cos theta, but negative of cos theta, minus cos theta. So it will be minus P. So what you can do? You can just reverse the limits here. Okay? You can just reverse the limit. So it will be PA cos theta, theta 1 to theta 2. So it will become minus PE cos theta 1 minus cos theta 2. And in general, it is written as P vector dot E vector. Okay? This is the potential, negative of potential. Okay? Got it? Now try to note it down. Giving you 1 minute to note it down. If anyone has any kind of doubt, you can ask right away, right now. Okay? Any kind of doubt, you can ask. Anyone has any kind of doubt? देखो, one thing that previous वाला slide सर लिखने के लिए. Okay, just a second, just a second. ये ना, ये था ना, just a second. ये नहीं था भाई, वो ये था, टॉर्क वाला था ना, टॉर्क वाला. हाँ, नोटेड डाउन, यही तो है. When you done with that ना, let me know. Is this done? JNV Raichur, is this done? Okay. देखो यहाँ पे ना एक अपन ने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, सॉरी फॉर दैट. देखो, व्हेन वी टेक, यहाँ तक सब ठीक है, माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स. अब कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से दिस टॉर्क हैज बीन कम, और ये फोर्स जो है इसे इस सेंस में घुमाने की कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज सेंस. बट ये जो डिस्प्लेसमेंट हम देते हैं ना, डी थीटा, दिस डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ ऑपोजिट टू द कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है? दिस डिस्प्लेसमेंट विल गिव ऑपोजिट टू द कंजर्वेटिव फोर्स, which means अगर रोटेशन इस तरफ नेचुरली हो रहा है due to this conservative force, so we will give the rotation in the opposite direction. And when you do so, the theta will become, between torque and this d theta, the theta will become 180 degree.
cos 180, and cos 180 is -1, so this minus will vanish out. This minus will vanish out. ठीक है. So again, when you integrate the sin theta, you will get minus cos theta, then this minus will come into picture. Okay, and then you don't need to reverse it. It will be theta 2 minus theta 1, theta 2 minus theta 1. And suppose we are taking this P cos theta 1, means initial energy. P cos theta 2 is the final energy, and P cos theta 1 is the initial energy. So initial potential energy ko we will considering 0. So that is why we can say that delta U here is minus P dot. Let me show you that delta U are getting minus of P cos theta 1, cos theta 2 minus cos theta 1. यही तो है ना. ठीक है, ये अपना डाइपोल है. ये मान लिया थीटा 1 पोजीशन थी और ये यहाँ पे पहुंच गया थीटा 2 पे. तो हमने इनिशियल एनर्जी को वी कैन राइट इट एट डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. इनिशियल एनर्जी को क्या कंसिडर कर लिया 0, एंड जो फाइनली थीटा 2 है उसे कंसिडर कर लिया है थीटा. सो व्हाट डेल्टा यू विल बिकम, इट विल बिकम माइनस पीई कोस थीटा, बिकॉज दिस पीई कोस थीटा 1 विल बी वेनिश आउट. ठीक है, so you can write p cos theta. Have you remember a vector dot b vector? It is ab cos theta. 11th में पढ़ा था ना. सिमिलर दिख रहा है. It will be minus p vector dot e vector. ठीक है, got it. अब देखो ये हो गया है ना. नाउ नॉन यूनिफॉर्म के बारे में भी बात कर लेते हैं. When the electric dipole is put in the non-uniform electric field. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में हमने इसे पुट कर दिया है. नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होगा कि E इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट. ये बहुत रेयरली पूछेगा लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, E इज नॉट कांस्टेंट. सो इन दैट केस, if this is the dipole, let's say this is the dipole and the field here is not uniform, so in that case, and this is short dipole, short dipole. ठीक है, तो यहाँ जो फोर्स होगा ना, फोर्स विल बी ऑन दिस माइनस क्यू और दिस प्लस क्यू. ठीक है, so that force is not constant, then that force is given by F is equals to P. P is the dipole moment into, sorry, P cos theta dE by dr. Just remember this. ठीक है, this dE by dr is nothing but the energy gradient or electric field gradient. ठीक है, this is called electric field gradient. इसे भी नोट कर लो एक बार. नोट इट डाउन एवरीवन. ठीक है, क्लियर है. देखो, अगर मैंने इसे इलेक्ट्रिक, ये मान लिया कोई भी डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट P है. ठीक है, सो अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क विल बी P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर. अब E भी मेरा इसी डायरेक्शन में है और P भी, तो क्या हो गया, जीरो एंगल हो गया. तो PE साइन जीरो, विच मीन्स टॉर्क तो मेरा क्या हो गया, जीरो. टॉर्क मेरा हो गया जीरो इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म, अगर हमारा डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन है, तब हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो.
But what about force, potential energy? It is minus P dot E. Means we can write it as PE cos of theta. अब देखो यहाँ पे खेल है, पहले केस में ये ई क्या था, यूनिफॉर्म था, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब ये ई नॉन यूनिफॉर्म है, so we can write it for P cos theta into E. ठीक है, got it? और ये E किससे आया होगा, किसी भी पॉइंट सोर्स से आया होगा, है ना? सो वी कैन से दैट इट इज P cos theta. E की वैल्यू को पॉइंट चार से कितना फील्ड आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, लेट मी जस्ट शो यू हियर. माइनस P डॉट E, P cos theta minus of P cos theta into 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. तभी तो वेरिएबल हुई ना फील्ड. अब देखो पॉइंट चार्ज से फील्ड कैसी होती है, ऐसी होती है, इधर उधर पैरेलल तो नहीं है, विच मींस नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है. ठीक है, दैट इज व्हाई रिटन द एक्सप्रेशन हियर. अब मुझे ये बताओ, फोर्स अगर मैं बात करूं, अभी मैंने लिख दिया वैसे एक्सप्रेशन, वो निकाल के बता रहा हूं कैसे आया होगा. फोर्स इज, वी कैन राइट, वर्क डन को क्या लिखते हैं, फोर्स इंटू डी आर. ठीक है, फोर्स इंटू डी आर. ओके, अब मुझे पता है ये भी क्या होगा, डी डब्ल्यू होगा. डी डब्ल्यू बाई डी आर को क्या लिख सकता हूँ, फोर्स. We also know that ki work done by conservative force is the negative of change in potential energy, and this is valid for short work also, very small work. ठीक है, so if you replace this dwc with this, because यहाँ पे भी तो work done क्या है, conservative force का work done है, so this will become minus of du by dr equals to f, which means for force we have to differentiate this and put the negative sign. So when you do so na, when you differentiate this du by dr, you will get minus p cos theta into, इसे you can write k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपॉन 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ, सॉरी डिफरेंशिएशन, d by dr 1/r स्क्वायर. So it will become, क्या बन जाएगा बताओ भाई, du by dr will become minus p cos theta into kq. R square will go up, it will become r raised to the power minus 2, and it will become minus 2 upon rq. ठीक है, so minus minus will plus, it will become 2p cos of theta into kq upon rq. ठीक है, and this is nothing but the force. So in general, what you can learn here, what you can see, that it is nothing but force is equals to P cos theta, and differentiate it, the electric field, the energy gradient. बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है? इलेक्ट्रिक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू यू ऑल, एवरीवन? Answer it. Then the last topic we have to cover, dipole oscillation. Okay. ठीक है, ये हो गया. देखो ये, this you can take a note of it.
ठीक है, ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। सो व्हेन P इज पैरेलल टू E, जब दोनों पैरेलल होंगे, नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म, P इज पैरेलल टू E, तो नेट फोर्स भी क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा। ठीक है, व्हेन P इज पैरेलल टू E इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, ठीक है ना, ये देखो इस तरह से, इस तरह से, अगर E इस तरफ है तो फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा नेचर में। अगर E इस तरफ है तो फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव। ठीक है, वो मैंने बता दिया आपको कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अब ये बताओ, मान लिया ये मेरे पास कोई डायपोल है, विच इज, जस्ट से, विच इज ऑसिलेटिंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड एट एन एंगल थीटा। ठीक है, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, एंड इट हैज बीन रोटेटेड टू दिस प्लस क्यू। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द टॉर्क, टॉर्क के बारे में अगर मैं बात करूं, तो व्हाट वी हैव सीन, दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू P vector क्रॉस E vector, which is PE sin of थीटा। ठीक है, टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इज नथिंग बट डी ओमेगा बाई डी टी, और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी, तो दिस टॉर्क इज नथिंग बट डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, इफ यू रिप्लेस द वैल्यू हियर, it will become d2 theta by dt square is equals to, and we have taken this as opposite sense, ऐसे रोटेट किया है। ठीक है, तो जो P और E के बीच में जो एंगल है ना, वो नेगेटिव होगा, so it will become minus of sin theta, we have rotated in the opposite sense। ठीक है, ऑपोजिट सेंस में रोटेट किया, तो P E sin of theta, now theta is very small, उस केस में क्या होगा, you can consider sin theta to be approximately theta. So we have an equation here that d2 theta by dt square is equals to minus of pe theta. और जब हमने oscillation पढ़ा था ना, we have seen this condition that d2 theta by dt square is directly proportional to minus theta. This is the condition for, this is the condition for, condition for what, condition for SHM। ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर SHM, एंड SHM में व्हेन यू रिप्लेस दिस, हमने देखा था कि d2 थीटा बाई dt स्क्वायर इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ थीटा माइनस k, so this k is nothing but omega square, have you remember it, f is equals to minus omega square x। ठीक है, have you remember it ना, माइनस के एक्स की जगह लिखते थे इसे, है ना, ओके। अब देखो, सो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है पी, ये क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, वी ऑल्सो नो दैट, लेट मी जस्ट चेंज द कलर हियर, टॉर्क हमारा किसके इक्वल होता है, आई इंटू अल्फा, है ना, व्हेन यू पुट इट हियर, ये होगा आई इंटू डी टू थीटा बाई डी स्क्वायर, आई इंटू डी टू थीटा बाई डी स्क्वायर। ठीक है ना, torque is I alpha. When you put the I alpha and equate it with minus of PE theta, ठीक है, then alpha you will have as minus PE divided by I into theta.
So this P by I is nothing but omega square. Omega square you have as PE upon I. ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? स्क्वायर रूट ऑफ पीई अपॉन आई. ठीक है. सो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, time period of oscillation of dipole. So we know that omega is nothing but 2 pi by t. So t will equals to 2 pi by omega. और ओमेगा अभी हमने देखा है क्या? स्क्वायर रूट ऑफ पी अपॉन आई. तो इट विल बिकम 2 पाई इंटू आई अपॉन पी इंटू. ठीक है. गॉट इट. क्लियर है? नोट इट डाउन. दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड. ठीक है. ओके. Anyone, any kind of doubt in this? Any kind of doubt? Any yes and no? Everyone? Okay. Okay. So this is it for today. If anyone has any kind of doubt, you can ask. Otherwise, the lecture is being over. Thank you so much for being attentive and being responsible. Take care of yourself. Keep it up. In the next class, we will be dealing with the motion of charged particle. Okay? And also see the condition for equilibrium in this topic. Okay? What? Bye bye. Take care.